quick learners, welcome to quick learning. So in this video we are discussing about the habits, yani 3 habits for a best programmer, for a good programmer. If you want to become that, then follow this video. Before jump to the video, if you are new here, please subscribe, hit the like button and also share with your friends. So let's start with the video. Now number 1 habit is nothing but the writing clean code. जी हाँ, अगर आपको बेस्ट प्रोग्रामर बनना है तो you have to write your code cleanly, structure wise. Yes, now basically clean code can really make you or break your coding skills. अगर आपने जो भी कोड लिखा है वो कोई पढ़ ही नहीं सकता, कोई अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता, then you have failed at your coding skills. So first practice that writing the clean code. Right now clean code can really speed up the process and make you more productive. So please practice to write a clean code, structure wise code, so that everyone can understand your code very nicely. Next habit is nothing but the planning 5 moves ahead. जी हाँ, if you want to become a good programmer, you have to plan first and then code. Okay, this is nothing but the most essential habit for a गुड प्रोग्रामर्स. ना जो भी टॉप कोडर्स होते हैं, राइट, उन्हें पहले से ही आइडिया होती है लाइक हाउ देयर ऐप विल लुक लाइक बिफोर दे इवन स्टार्ट. जी हाँ, स्टार्ट करने से पहले वो उनके पास आइडिया आ जाती है कि उनका ऐप, उनकी वेबसाइट, उनका प्रोजेक्ट कैसा दिखेगा. राइट, सो दिस इज नथिंग बट द मोस्ट इसेंशियल पार्ट और मोस्ट इसेंशियल हैबिट फॉर अ गुड प्रोग्रामर. ओके, यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी क्योंकि ये सब करना, विजुअलाइज करना, प्लान करना स्टार्टिंग में बहुत हार्ड जाता है फॉर अ बिगनर्स. राइट, सो फर्स्टली यू हैव टू रिसर्च एवरीथिंग. जो भी आप कर रहे हैं उसके बारे में रिसर्च करो. उसके बाद पेन एंड पेपर लेके विजुअलाइज करो एवरीथिंग. राइट, एंड देन राइट योर कोड. दिस इज नथिंग बट दिस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर अ गुड प्रोग्रामर. नाउ मूविंग ऑन, नंबर 3 हैबिट इज नथिंग बट ऑलवेज लर्निंग. जी हाँ, टॉप कोडर्स कभी भी उनकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो स्टॉप नहीं करते. So top coders always think that small little learning is better than no learning. Okay, top coders always think that small little progress is always better than no progress. So you have to learn everything every day. Okay, start learning new skills, new language सीखो, framework क्या है ये सीखो, libraries सीखो and etc. So you have to follow these 3 most essential habits. First habit is nothing but the writing clean code. Second is nothing but the प्लानिंग 5 moves ahead, पहले से प्लान करके रखो एंड देन राइट डाउन करो. एंड थर्ड इज नथिंग बट दी always learning. Right, so I hope you got the concept. I hope you like the video. If you, then subscribe, hit the like button. Till then, take care, bye, and also share with your friends.